Hello students, a very lovely good morning to all of you. Welcome back in your English class. Today we will do difficult words in question answer of chapter 4. Write down date, see. Chapter 4. New friends. We have already read this chapter. हम इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं. Today we will do difficult words in question answer. So everybody take out your book. Everybody take out your copy. Firstly, in the first page, we draw a picture. You make a circle. Then you do in this way. Very easy way. Firstly, we make two friends. Like this. Motu and Patlu. Motu and this is Motu, this is Patlu. This is very simple way. First you draw a circle, then you make this line, okay, and make the hand just like this. Good friends. Motu, Patlu, friend forever. Good friend. I will send the pic. Okay, student. Clear? Next. Firstly, we will draw the picture. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट राइट डाउन डेट CA चैप्टर 4 न्यू फ्रेंड्स. स्टार्ट डिफिकल्ट वर्ड्स. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. राइटिंग सब बच्चों की बहुत साफ होनी चाहिए. आई विल चेक द कॉपी. क्लियर? DIFFICULT difficult. WORDS difficult words. First word is bright. BRIGST bright. Bright means चमकीला, चमकदार. Speak. BRIGHT bright. Bright means चमकीला, चमकदार. Note down this word. Second word is EXPLORE explore. EXPLORE explore. Explore means पता लगाना. Explore. EXPLORE explore.
Third word is increase. 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 Increase यानी बढ़ाना. Increase यानी बढ़ाना. loudly. 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 Loudly means जोर से, तेजी से. Loudly. I have no space, that's why I am writing here. Noticed. 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 Notice यानी ध्यान देना. Noticed. In this chapter, the meaning of notice is ध्यान देना. अदरवाइज आपको स्कूल से भी नोटिस मिलता है, वो भी नोटिस होता है. नोटिस ध्यान देना. Sixth word is replied. 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 replied means जवाब देना, आंसर करना. जब मैम आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, यू रिप्लाइड, आप आंसर करते हैं, दैट इज रिप्लाइड, जवाब देना. रो means पंक्ति. रो means पंक्ति. Again, everybody speak. BRIGST. Bright. BRIGST. Bright. Bright means चमकदार. EXPLORE. Explore. Explore means पता लगाना. EXPLORE. Explore. Explore means पता लगाना. INCREASE. Increase. Increase यानी बढ़ाना. Increase. LOUDLY. Loudly. Loudly यानी बहुत तेजी से, तेज से आप loudly शाउट करते हैं. Loudly. NOTICED. Noticed. Noticed यानी ध्यान देना. REPLIED. Replied. Replied यानी जवाब देना. ROW. Row means पंक्ति. Again speak. Bright. Bright. BRIGST. Bright. Explore. 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 Increase. 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 LOUDLY. 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 NOTICED. Noticed. REPLIED. Replied. ROW. Row means पंक्ति. Every student note down these difficult words in your copy and first letter should be small. Some कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क सेंड किया है, मैंने वर्क देखा है तो उन्होंने फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर लिख रखा है. Every student write the first letter in small in difficult words. Okay, now we will move to the question answer. Write down your date, chapter, question answer. Question answer. Question number 1.
Okay. First question is, what was the COLOUR color of PRANAV Pranav's new school bag? Question is, what was the color of Pranav's new school bag? Pranav का P capital because it is a name. Proper noun is there. Name. What was the color of Pranav's new school bag? WHAT. What? WS was the COLOUR color of Pranav's new school bag. It means जो प्रणव का न्यू स्कूल बैग था उसका कलर कैसा था? कैसा कलर था स्टूडेंट? ब्राइट रेड. राइट डाउन. PRANAV प्रणव पोस्ट ऑफिस एस. इसे बोलते हैं प्रणव का. जब हम इस तरह से कोमा लगा के एस लगाते हैं तो पोस्ट ऑफिस एस. इसे बोलते हैं का. प्रणव न्यू स्कूल बैग color was BRIGST bright red. Pranav's new school bag color was bright red. यानी प्रणव का जो न्यू स्कूल बैग था उसका कलर कैसा था? ब्राइट रेड. PRANAV Pranav's NAW new ST as the school bag COLOUR color was bright red. Every student note down this question answer in your copy and writing should be neat and clean. Focus on your writing student. Please my dear student, focus on your writing. Done. Next question is, who was Pranav's best friend? Who was Pranav's best friend? Who was Pranav's best friend? यानी प्रणव का who मीन कौन, was मीन था, Pranav's best friend. प्रणव का बेस्ट फ्रेंड कौन था? Student tell me, who was Pranav's best friend? Arun. Spelled out Arun. ARUN. Arun was Pranav's best friend. Arun was Pranav's best friend. Again I am repeating. WHAT. What? WAS was the COLOUR color of Pranav's new school bag. प्रणव का जो न्यू स्कूल बैग था उसका कलर कैसा था? Pranav's new school bag color was bright red. जो प्रणव का न्यू स्कूल बैग था उसका कलर ब्राइट रेड था यानी चमकीला रेड कलर का था. WHO who, WS was, PRANAV Pranav's best friend. Who was Pranav's best friend? प्रणव का बेस्ट फ्रेंड कौन था? ARUN Arun. WS was,
PRANAV, प्रणव बेस्ट फ्रेंड। अरुण जो था वो प्रणव का बेस्ट फ्रेंड था। डन स्टूडेंट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। In which class was Pranav? In which class was Pranav? In which class was Pranav? प्रणव कौन सी क्लास में था? Write down answer. PRANAV. Pranav was in class first B. Okay. Pranav was in class first B. Pranav was in class first B. In WHICH, which CL class WS was PRANAV. Pranav, in which class was Pranav? Pranav कौन सी क्लास में था? PRANAV. Pranav WS was in CL class first B. प्रणव जो था वो फर्स्ट बी क्लास में था। ओके स्टूडेंट, दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। एवरी स्टूडेंट नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर इंग्लिश कॉपी। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। फोकस ऑन योर राइटिंग एंड रीडिंग ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू हैव? गुड स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, bye bye, take care.